Class 7 subject social science topic our environment chapter 1. What is lithosphere? The lithosphere crust of the earth is solid. The lithosphere जो crust है earth की वो solid है, सख्त है, बहुत सख्त है. और liquid पानी हुआ, solid liquid gas हवा, which consists of rocks and minerals. जिसके पास उस पर rocks और minerals है, बड़े पत्थर और छोटे पत्थर है. There is crust, mantle and core. There is crust, mantle and core. ऊपरी सतह, बीच में सतह, नीचे सतह. Crust is upper surface. Mantle is middle. Core is there must exist. Core is lower layer, lower must the crust. Lower layer crust. The upper crust consists of igneous and sedimentary rocks. There is silica, aluminum, and potassium, which are the two major components of environment. Biotic environment. Major components of biotic environment कौन सा है? The two major components of bioatmosphere are natural and human-made environment. दो बड़े component जो natural major component जो है atmosphere के, the two major components of environment. The major components of environment. The major components of atmosphere are natural atmosphere, environment. The two major components of environment are natural and human-made environment. और natural है कुदरती जो बना हुआ है, और इंसान ने जो बनाया है, मकान, cloth, food, houses, buildings, bridges, embankment, dams, etc. are human-made phenomena. Natural-made phenomena, forests, deserts, natural vegetation, forests, Greenland, grassland, Siberia, Dras, Punji, etc. refers to both biotic and abiotic environment existing on human environment. Human environment scale. Human environment reaches the activities, creations and interactions. Creativity activities जिसने three main activities: food, close shelter, creation of पैदाइश, किसने जन्म बच्चे ने जनरेशन टू जनरेशन जन्म लिया, पॉपुलेशन को बढ़ाना, बच्चों का जन्म लेना, एंड इंटरलेशन ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स में इंटरेक्ट करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, वो उसको कहते हैं ह्यूमन मेड फिनोमेना, नेचुरल मेड फिनोमेना, वो इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट. व्हाट इज बायोस्फीयर? प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेड बायोस्फीयर. प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, पौधों और जानवरों की सल्तनत एक साथ बायोस्फीयर बनाते हैं, किंगडम सल्तनत बनाते हैं. और लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग जिसमें जिंदा चीज़ रहते हैं, जिंदा जानवर, जिंदगी पसंद करती है. सस्टेन लाइफ. इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ. ये नैरो जोन ऑफ अर्थ है. वायर लैंड, वाटर, एयर. वायर लैंड नैरो जोन, बड़े काफ़ी ज़मीन बड़ी नहीं है उसमें, मगर छोटी ज़मीन में नैरो जोन में लैंड, वाटर एंड एयर मौजूद है. ज़मीन, पानी और हवा मौजूद है. इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं टू सपोर्ट लाइफ को मदद करने के लिए. Take the correct class 7th subject social science or environment chapter 1. Take question 2. Take the correct answer. Which is not a natural ecosystem? Desert aquarium first. ठीक आएगा एक्वेरियम का. एक्वेरियम जिसमें आर्टिफिशियल मछलियाँ रखते हैं, जिसमें मछलियाँ छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, आर्टिफिशियल नकली मछलियाँ होती है, शीशे का होता है. विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? लैंड, रीजन, कम्युनिटी. लैंड ज़मीन का, रीजन का, कम्युनिटी का. लैंड ही ठीक आएगा कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट का. तो वो तो बाकी तो रीजन तो कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट. लैंड आएगा, रीजन, कम्युनिटी तो ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट रह गया है. विच इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट. विच इज़ ए component which is a human made environment. Environment कौन सा है? माउंटेन, सी, रोड,
तो इसको रोड आएगा। माउंटेन सी तो कुदरत ने बनाया है, समंदर और पहाड़ और समुद्र कुदरत ने बनाया है। विच इज़ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, थ्रेट टू ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग पॉपुलेशन इज थ्रेट टू नेचुरल एनवायरनमेंट। Chapter 1st, Class 7th, Subject Social Science. Topic of environment. Question: Imagine the following: biosphere, narrow zone where land and water and air interact. वहाँ पर narrow zone है, वहाँ पर land, water और air interact करते हैं. Atmosphere, blanket of air which surrounds the earth. Blanket of air है, envelope है, envelope of air surrounds the earth which surrounds our earth, जो हमारे earth को surround कर रहा है. Hydrosphere, domain of water, जो पानी से भरा हुआ है. Environment, relation between the ऑर्गन एंड देयर सराउंडिंग्स, जिंदा चीज़ों, या जिंदा इंसानों या जानदारों के साथ, आसपास में सराउंडिंग के साथ ताल्लुक़ रखना, उसको कहते हैं एनवायरनमेंट।